So today we will discuss atom, the next chapter. Atom. Atom already you have read in class 11th, I think, in chemistry. One chapter is there, atomic structure. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Thomson's model? No or not? Yes, sir. Yes, sir. Rutherford's model? Yes, sir. Bohr's model? Yes, sir. तो केमिस्ट्री जहाँ थिला फिजिक्स रे सब से जिनसे ही अच्छे. ओके, बट आमे खाली एक्स्ट्रा टिके डिस्कशन करिवा किछिरा जिनसे तम मानकर फिजिक्स रे नथिला माने केमिस्ट्री नथिला सेउडा आमे टिके डिस्कशन करिवा आउ टिके पाठडा को रिवाइज कर दबा. सो इट्स जस्ट ओनली द रिवीजन क्लास ऑफ एटम. अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट स्टार्ट्स थॉमसन्स मॉडल. जे थॉमसन प्रपोज्ड ऑन एटॉमिक मॉडल. जेतेबेले इलेक्ट्रॉन बाहरला, इलेक्ट्रॉन जेतेबेले बाहरला सेतेबेले कोन हैला इलेक्ट्रॉन एटम रो को जगह रे अछि से विषय के जानि नथिले. ओके, तापरे पॉजिटिव एटम रे पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज बोली समस्त जानिथिले. बट पॉजिटिव चार्ज केमिति डिस्ट्रीब्यूट हेछि, कोठी अछि, इलेक्ट्रॉन कोठी अछि, माने एटम टा एक्जेक्टली केमिति पॉजिटिव और नेगेटिव गुडा एटम भितरे अरेंज हेचंदी से विषय कहार भी इंफॉर्मेशन नथिला. सेति के बेले जे थॉमसन तांकर गोटे मॉडल देले. मॉडल माने जानिछ केमिति देखिबे को एटम टा हेतिबो, तार गोटे प्रोटोटाइप टाइप रो गोटे मॉडल से चिंता कले जे केमिति एटम टा हेतिबो. समस्त शुनिछ जे थॉमसन को मॉडल रो आ गोटे ना कोन थिला, ताको आ कोन कहंती? Sir, watermelon. Plum pudding. Model. प्लम पुडिंग मॉडल. बट हमर हमें लोकल लैंग्वेज रे ताको कोन बोली कहबा? Watermelon. वाटरमेलन वाटरमेलन. तो जे थॉमसन को मॉडल ले थिला कोन एक्चुअली माने जे थॉमसन कहले एटम इज ए पॉजिटिव स्फीयर. माने होल स्फीयर टा होचे एटम. की कहले जे थॉमसन से कहले होल स्फीयर टा, ये होल स्फीयर टा होचे एटम जो थरे की इलेक्ट्रॉन माने सब डिफरेंट डिफरेंट प्लेस रे इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन सच ए वे दैट इलेक्ट्रॉन गुडा ता भितरे एमती गोटे गोटे जगह अछन. होल टा होचे पॉजिटिव, पूरा स्फीयर टा पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन गुडा एमती जगह अछंती जेमति की पॉजिटिव सेंटर माने सब जगह पॉजिटिव रो सेंटर टा एठी, सब जगह नेगेटिव गुडा एमती अरेंज हेतिबे सेमाने कर भी सेंटर टा सेठी लाई करिवो. Positive center and negative center coincides with each other, so atom is electrically neutral as well as stable. Thomson's का मॉडल एटम टा स्टेबल थिला. मन रखिता, important question. In which model atom is stable? Thomson's model or Rutherford's model? आ पर हम Rutherford's model को जेबा. जदियो Rutherford's model टा आ परे बाहरी थिला बट सेथि एटम स्टेबल नथिला, मॉडल कोलैप्स हे जाउतला. और थॉमसन्स मॉडल जदियो रॉन्ग थिला तो भी से स्टेबिलिटी ऑफ एटम को क्लियरली एक्सप्लेन करैथिले जोटा कि 100% करेक्ट. एबे भी से जिनसटा जेमिति अरेंजमेंट होउछ हो पॉजिटिव सेंटर मस्ट कोइंसाइड विथ नेगेटिव सेंटर, दैट मस्ट बी एप्लीकेबल. ओके, तो एटम टा एक्जेक्टली केमिति थिला देखियो को. दिस द एटम और नॉट राइट? Yes. Yes, sir. एटम एमिति थिला जो थरे की कोन अछि अरेंजमेंट सी प्लम पुडिंग. तमे ता माने वाटरमेलन, तमे वाटरमेलन रो जोडा सब खाई दोछ कोडा खाउछ? रेड कलर ना मंजी? No, Red no. color. रेड कलर से रेड कलर टा होची पॉजिटिव स्फीयर टा. रेड कलर टा पॉजिटिव स्फीयर आउ मंजी गुडा सब कोन? Electron. Electron. इलेक्ट्रॉन ताल तमे खाउछ पॉजिटिव ना नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव Positive. तम पॉजिटिव खाउछ हला आउ कोन फोपडुछ? इलेक्ट्रॉन Electron. इलेक्ट्रॉन खाई दोछ पॉजिटिव, फोपडी दोछ इलेक्ट्रॉन, राइट? सो दिस इज द थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल. अंडरस्टूड? ओके, तो थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल यही थिला. सो बुझी पारो किंतु होल टा को से पॉजिटिव स्फीयर बोली कहथिले. इलेक्ट्रॉन्स रो एमिति अरेंजमेंट हेतिबे जेमति कि तांका सेंटर टा पॉजिटिव सेंटर से कोइंसाइड करियो. बट ए मॉडल बहुत डिमेरिट्स आसला.
कौन सब डिमेरिट्स आसला एटॉमिक मॉडल रे थॉमसन कर आ पर आसी गला अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जहा को जे थॉमसन बुझे पाले नहीं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन बुझे पाले नहीं जे से एक्सपेरिमेंट रे जो ऑब्जर्वेशन गुडा सब आसीथिला ताको बुझे पाले नहीं स्पेक्ट्रल लाइंस जो बाहर छि एटम देहरु स्पेक्ट्रल लाइंस से को बाहर जाइतला ओके स्पेक्ट्रल लाइंस जो बाहर छि ताको भी से एक्सप्लेन कर पे नथले जे काहे स्पेक्ट्रल लाइंस वो एमती बाहर छि डिफरेंट सीरीज जो अच्छी तुम मान लाइमैन बाल्मर ताको भी एक्सप्लेन कर पालेनी सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर विथ थॉमसन थॉमसन का मॉडल सेट कोन हला फेल मारला तो थॉमसन मॉडल समझते बुझी पालो वाटरमेलन मॉडल होल एटम का Yes, पॉजिटिव स्फीयर Yes, sir. जा भीतर की इलेक्ट्रॉन्स माने सब इम्बेडेड ही अछंती सच विदाउट पॉजिटिव सेंटर कोइंसाइड्स विथ नेगेटिव सेंटर सो एटम इज स्टेबल इन थॉमसन मॉडल जदियो स्टेबल किंतु से बुझी पालेनी जे व्हाई इट इज बा what is the cause of alpha particle scattering experiment तार कॉस्ट को से बुझी पाले अंडरस्टूड सो yes, sir. एबे हम डिस्कशन करिवा नेक्स्ट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट तला अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कोन व्हाट इज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रे कोन एक्चुअली हेतला मत फर्स्ट को हु परफॉर्म दिस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की एक्सपेरिमेंट करथिले अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड रदरफोर्ड समस्त का पार्टी रदरफोर्ड को कथा ही बाहर but the persons who are Assistant. really taking the pain okay those who are behind this real experiment you people are forgetting them Jaeger Students. Baker and Marsden. Marsden. yes Jaeger and Marsden दी जन स्टूडेंट रदरफोर्ड कर Jaeger and Marsden सी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करथिले रदरफोर्ड ताको ऑब्जर्व करथिले ऑब्जर्वेशन देथिले बट Marsden and Jaeger performed the alpha particle scattering experiment real experiment is done by them से माने एक्सपेरिमेंट करी की ऑब्जर्वेशन सब बाहर करथिले एग्जाम रे तमे सन को ना कोड देखिबो Jaeger Marsden एक्सपेरिमेंटर जो अच्छी फिगर ता स्कीमेटिक डायग्राम से तळे लिखा है Jaeger Marsden schematic diagram of a Jaeger Marsden experiment हला क्लियरली बुक रे लिखा है schematic diagram of a Jaeger Marsden experiment I'll show you that one but से experiment थिला कोन एक्चुअली Jaeger Marsden experiment रे कोन करिथिला अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल फर्स्ट मते को अल्फा पार्टिकल कोन है अल्फा पार्टिकल दा जे अल्फा अल्फा कहउछ हमें अल्फा पार्टिकल कोन एक्चुअली who can tell me this is which nucleus So को helium. Sir, nucleus helium nucleus. helium nucleus गोटे helium टा एटा जदि गोटे helium हैला देखो ता भितरे दीटा प्रोटॉन थाए आउ दीटा न्यूट्रॉन थाए आ ता बाहरे दीटा इलेक्ट्रॉन बुलु थांती एटा helium टा helium रे जदि मु दीटा इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देबी तले खाली कोन बंचिबो दीटा प्रोटॉन आउ दीटा न्यूट्रॉन खाली एति की बंचिबो एटा हला हीलियम न्यूक्लियस आ चार्ज होची +2 हला जदि हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दवा चार्ज ता पॉजिटिव हे जिवो और ता चार्ज हे जिवो +2e हीलियम न्यूक्लियस चार्ज ओके तले आ ताको हम अल्फा पार्टिकल बोली कहबा तले मते को अल्फा पार्टिकल चार्ज केते हला +2e +2e काहे के हला दीटा प्रोटॉन अछंदे न्यूक्लियस रे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हे जायछंदे it will lose 2 electrons data electron lose kala beli charge ta positive hela and that is a +2 right electron lose कर दला से तले एक्सपेरिमेंट रे एग्जैक्टली हेइथिला कोन अल्फा पार्टिकल बाहर थिला इट्स विजिबल दिस द एक्सपेरिमेंट देखो समझते गोटे लीड बॉक्स टे अछि देखाओ समस्त को यस से लीड बॉक्स भितरे अच्छी कोन हमरा
से लीड बॉक्स भीतर रखा है गोटे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टा के अल्फा पार्टिकल एमिट करूची ता भीतर अल्फा पार्टिकल बाहर मैं नेक्स्ट चैप्टर जले न्यूक्लियर पढ़ा हबो से तुम बुझी परिबो केमती रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अल्फा पार्टिकल एमिट करे अल्फा पार्टिकल ता दूर बाहर की ताकू आउ जो दिटा प्लेट रखा है सेमान को रखा है ओनली टू कॉलिमेट द अल्फा पार्टिकल माने ताकू नैरो बीम करके अल्फा पार्टिकल को छाड़िया पई पुणी आउरी लीड रखा है तम मन भीतर क्वेश्चन आसतो सर आपण लीड काहे नै छंदी मु तो नै सेमान काहे नैथिले सर लीड काहे नैथिले सर लीड लीड ऑब्जर्व करे नहीं है रेडिएशन लीड इज ए गुड ऑब्जर्वर ऑफ रेडिएशन लीड इज ए गुड ऑब्जर्वर सेतपै से अलग डायरेक्शन रो सब रेडिएशंस को ऑब्जर्व कर दबो केवल गोटे डायरेक्शन एमिट करे जो पटे होलटा अछि बुझिला अलग डायरेक्शन ऑब्जर्व कर दबो जो पटे होल अछि सेही पटे साइड रे ही केवल रेडिएशंस बाहरबो ओके ताको कॉलिमेट करके एमिट करिवो राइट अलग रेडिएशंस गुडा जीवनी काहेकि ना एरा सब ये रेडिएशन ना हमर न्यूक्लियर रेडिएशंस दे कैन पेनिट्रेट द बॉडीज ओके सेतन से केवल से होल देखि रेडिएशंस गुडा जीवो अंडरस्टूड तापर गला परे तापर एबे कोन हो रेडिएशन गला परे आस्ते आस्ते व्हाट विल हैपन गोल्ड फॉइल बाजिबो थिकनेस केते what the thickness of the gold foil The 2.1 into 10 to the power minus 7 meter. 2 into 10 per minus 7 meter हम एति की मन रख परियो बेटर 2 into 10 per 7 meter से गोल्ड फॉइल बाजिला परे सबु सेंट्रलाइजेशन हबो सेगुडा सब एपट सेपट है कि पळेबे स्कैटर्ड है जो सन डिफरेंट पाथ रे और जो स्कैटर्ड है कि इलेक्ट्रॉन माने सब याड साइड पळे गेले ताको कैप्चर करिया पई चारि पट साइड रे कोन दिखछो त माने गोटे रोटेटेबल डिटेक्टर देख पाछ त एटा डिटेक्टर ता देह रे जाई कि बाजिबो कोन से जो अल्फा पार्टिकल गुडा जाई कि ता देह रे बाजिबो राइट को माने स्कैटर बेटी who gets scattered अल्फा alpha पार्टिकल particle अल्फा पार्टिकल गुडा गोल्ड न्यूक्लियस रे दे स्कैटर हला तापर ऑब्जर्वेशन जहा आसु हम डिस्कशन करिबा सेमान जे कि बाजिले में जानिबा जे ई जगह रे सर बाजिले बोले हम जानि परिबा सेतपय से फ्लोरोसेंट स्क्रीन गोटे दिया है चारि पटे कोटेड विथ जिंक सल्फाइड रे कोट करके गोटे फ्लोरोसेंट स्क्रीन टे देखो तादरे बाजिले जे कि हम जानि परिबे जे नै तादरे बाजिला देन इट विल मूव अंडरस्टूड so this is the experimental arrangement of what Rutherford's experimental arrangement of Rutherford's atomic model means Rutherford's na alpha particle scattering experiment ro ये थला experimental arrangement hope everybody understood the experimental arrangement yes sir so let's discuss the observations made in alpha particle scattering experiment बुझ पाला समझते जते बेले अल्फा पार्टिकल गुडा सब गोल्ड लीड बॉक्स रो बाहर की गोल्ड फॉइल बाजिला पर मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर passing through it few alpha particles scattered at less angle very few scattered at a more angle and 1 in 10,000 retraces its path so let's discuss the observations what happened actually observations it is a gold nucleus okay gold nucleus एटा observation number 1 देखो मु एमती लिखि दोची observation number 1 एटा 1 observation so exam रे पढले तुम मन रखियो जम सुविधा हो मु सेमती कहि दोछ तुमको observation number 1 हला most alpha particles कौन are going As undeviated. हला most of alpha particles are going undeviated बहुत alpha particle they are going undeviated सब सीधा सीधा पळे जाउछंदी हला नंबर 1 हला most तापर ऑब्जर्वेशन कौन हला few alpha particles scattered एटा स्कैटर देखो एटा तर सीधा रास्ता थिला बट एटा जति के एंगल से टर्न करिगला दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ स्कैटरिंग phi few alpha particles scattered at less angle एटा phi टा लेस देन केते डिग्री अछि
90 degree. 90 degree. Few alpha particles is scattered at less angle. Second observation is few. Number 3 है very few. Very few कौन हबो? Very few alpha particles Scattered scatter at at more angle. more angle. Very few. तांका number टा आहुरी बहुत कम. Very few alpha particles scattered at more angle. देखो एमती पड़े गले. हला माने सही पट साइड को पड़े गले. Very few scattered at more angle means greater than 90 degree. तापरे number 4 1 in 10,000 के लिखुछन्ती 8,000 के लिखुछन्ती 6,000 के लिखुछन्ती 16,000 जे जा लिखु हला तो 1 in 10,000 retraces the path ये ला ऑब्जर्वेशन नंबर 4 जोटा सेंट्रल लाइन दे जाइतो न्यूक्लियस रो से पूरा रिटर्न तक पड़े गला एटा 2 ऑब्जर्वेशन 3 ऑब्जर्वेशन 4 ऑब्जर्वेशन तो मैच करा ऑब्जर्वेशन को एटा देखो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मु कोन कहली टेल मी Most alpha particle pass undeviated. undeviated number 2 कोन कहली few alpha particles scatter at Less angle Yes, sir. than 90 number degree. 3 कोन कहली very few scatter at More angle. more angle then 1 in 10,000 retraces his path जो path रे जाइतला सेही path रे से रिटर्न करके पळे आसी so these are the observations made okay तो number 5 आउट ऑब्जर्वेशन हमें थरे जोड़ी दबा देखा आउ कोन ऑब्जर्वेशन मु जोड़ी दोछि थरे angle of scattering most ए समय angle of scattering ता केते मते को undeviated means angle of scattering केते 0 degree. 0 degree few case रे angle of scattering ता कोन हला ना less than 90 Less than 90. very few case रे greater than 90 Greater than 90. ए केस रे 180 ए चारिटा का ऑब्जर्वेशन रो हमें आउट ऑब्जर्वेशन आनी परिबा आउ कोन ऑब्जर्वेशन आनी परिबा देखो मुइले पटे तळको आसिली तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कमुच ना बढ़ुची कमुची बट एपटे तळको आसिला बेलको एंगल कोन होची बढ़ुची माने एपटे बढ़ुची एपटे कमुची तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड आ एंगल ऑफ स्कैटरिंग भीतर रिलेशन ता को भले आसी डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन जदि ग्राफ ड्रा करिवे समान के भितरे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड n phi एपटे बे एंगल ऑफ स्कैटरिंग देखा जीरो एंगल ले मोस्ट मींस सबुट बेसी अल्फा पार्टिकल होचन जीरो एंगल ले त माने एमती हो ग्राफ ता एपटे टच करिवनी से ऊपर तळु इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ तळे भी टच करिवनी हला तळे भी से टच करिवनी अंडरस्टूड ये ला ऑब्जर्वेशन नंबर 5 ऑब्जर्वेशन नंबर 5 रे कोन ला the number of alpha particles scattered n phi is inversely proportional to sin to the power 4 phi by 2 is inversely proportional to sin to the power 4 phi by 2 number of alpha particles is scattered n phi understood my point n phi is inverse proportional to sin to the power 4 phi an experimental observation but sin to the power 4 exactly kemte asila that is done mathematically by our scientist but ame plus 2 level amu khali direct expression deichandi the number of alpha particles scattered is inverse proportional to sin to the power 4 phi by 2 now understood Yes. observation समस्त बुझी परला और observation रो conclusion जहा आसिला सेला रदरफोर्ड postulate हला कोन रदरफोर्ड postulate हला कोन रदरफोर्ड तांको postulate रे कहले atom consists of how many parts atom कितना पार्ट रे consists of how many parts sir tell me atom consists of how many parts two parts atom consists of two parts one is nucleus nuclear part another one is extra nuclear part atom को दीटा पार्ट डिवाइड कराला गोटे न्यूक्लियर पार्ट गोटे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो न्यूक्लियर पार्ट रे whole mass of the atom is concentrated at its center ए जो कंक्लूजन टा
रदरफोर्ड ही देले से कहले आटम रो सब जाक मास सेंटर ही कंसंट्रेट हेछि सब जाक पॉजिटिव चार्ज सेंटर रे कंसंट्रेट हेछि पॉजिटिव चार्ज थॉमसन कहितले जे होल स्फीयर टा पॉजिटिव चार्ज दैट्स रॉन्ग सेंटर रे सब जाक पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट हेछि सेति पाई से एते पॉजिटिव जे जेते बेले एपटो आसिला अल्फा पार्टिकल ताको रिटर्न करके भी पठे देला अल्फा पार्टिकल को बुझेला the whole mass of the atom and whole positive charge is concentrated at the center and is called as तना कौन देले कौन तना देले well who is the great man discovered nucleus Rutherford discovered nucleus तो discovery of nucleus गला Rutherford का नाम रे बुझेला तो Rutherford discovered nucleus एबे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट सहित से जहा कहले तांको पोस्टुलेट पूरा मैच करिगला कुछ असुविधा नै ओके एटम रो बहुत स्पेस एम्प्टी अछि सेहित में अल्फा पार्टिकल्स गुडा बहुत उडे दे आर गोइंग अनडेफिनेटेड आ इलेक्ट्रॉन्स माने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रो अवस्था कोन हेतिबो ना इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन orbit random motion in which orbit electrons revolve around the nucleus in which orbit which shape Very elliptical orbit elliptical No. orbit circular orbit circular electrons revolve around the nucleus in circular orbit so circular path रे in circular path रे इलेक्ट्रॉन माने न्यूक्लियस चारिपटे बुलुछंती बोली से कंक्लूजन दे ओके इलेक्ट्रॉन माने न्यूक्लियस चारिपटे सर्कुलर पाथ रे बुलुछंती बोली रदरफोर्ड कंक्लूजन देले तले बुझिला तांको पोस्टुलेट रे कोन कहले तो फास्ट से कहले एटम डिवाइड्स इन टू पार्ट्स न्यूक्लियर पार्ट एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट and nuclear part रे कोन कहले and the whole mass and the whole positive charge is concentrated at the center as it's called as a nucleus okay our extra nuclear part रे से कहले the electrons revolve around the nucleus in circular orbits so Rutherford is the man who calculated the radius of a nucleus so nucleus discover कर नथले केवल से radius of nucleus भी measure करथिले Rutherford से कोन करिथिले actually Rutherford से न्यूक्लियस रे रेडियस केमति मेजर करले हम त कोन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोले हम कहउछे सेही जिंस तो हम बर्तन डिस्कशन करिबा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच केमति रदरफोर्ड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मेजर करथिले लेट्स सी से एग्जैक्टली जहा करथिले हम से कथा ही करिबा ताले एठी रहला न्यूक्लियस एटा सेंटर ता से कहली जो अल्फा पार्टिकल ता पूरा सेंट्रल लाइन देके आसुची हला जो अल्फा पार्टिकल सेंट्रल लाइन देके आसुची तापर रिटर्न करी पळे जाउची तमे से अल्फा पार्टिकल को वर्तमान नियो राइट अल्फा पार्टिकल चार्ज हला +2e से सड आसीची सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी नेकी माल आसीबो केमती मते को गोल्ड न्यूक्लियस रे चार्ज केते हेतिबो न्यूक्लियस भितरे को चार्ज पार्टिकल अछि positive Positive. प्रोटॉन ताले जेतिकीटा प्रोटॉन z नंबर ऑफ प्रोटॉन थिबा ना z होच एटॉमिक नंबर जार जेता एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तेनु zd तेनु चार न्यूक्लियस चार्ज हो zd अल्फा पार्टिकल चार्ज हो +2e ओके सेटो जेतला अल्फा पार्टिकल ता आसुची सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी नै कि सी तो पॉजिटिव ये ताको कोन करबा अट्रैक्ट करबा रिपेल करबा Repel. ताको ये रिपेल कला ताको रिपेल कले आस्ते आस्ते तार काइनेटिक एनर्जी कोन हला कमिला ना बढ़िला Formula. कमी कमी जेतले पाखु पाखु आसुची काइनेटिक कमी कमी लास्ट को गोटे पॉइंट रे काइनेटिक एनर्जी तार 0 हे जिवो इट विल कम टू ए हाल्ट 0 हे गेला परे पुणी आउथरे से उल्टा चलला ओके उल्टा चलला ता काइनेटिक एनर्जी 0 हे गेला माने से काइनेटिक गल्ला कोडे एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी स्टोर्ड से निश्चय कोथरे कन्वर्ट हेतिबो कोऑर्डिनेट कन्वर्ट हे गेला सेदला आउट potential पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हे गेला
कारण से आउट चार्ज पार्टिकल पाखु आसुची गोटे चार्ज पार्टिकल तमे ताको भाबनी गोटे अल्फा पार्टिकल गोटे न्यूक्लियस यू जस्ट ट्रीट देम एज टू चार्ज पार्टिकल्स ये गोटे चार्ज पार्टिकल ये गोटे चार्ज पार्टिकल ये बतन याडे मूव करके आसुची ग्रेजुअली तार काइनेटिक एनर्जी कमिला ता पोटेंशियल जे बढ़िला लास्ट को गोटे पॉइंट रे काइनेटिक जीरो हो गला सब जगह पोटेंशियल जे कन्वर्ट हो गला जोठी जीरो हो गला से स्टेट रिटर्न कला तो रदरफोर्ड कहले से जोठी फेरी की पळेला सेठू न्यूक्लियस रो सेंटर पर्यंत डिस्टेंस ता होची रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दैट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस तमने से कहले जोटा को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कोचे दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जहा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस सेया की कहले रदरफोर्ड कहले सेइथरु से रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बाहर करे But are you convinced? Rutherford jaha कहथिले distance of closest approach is equal to radius of nucleus. Are you convinced it is correct? No, sir. Why you are not convinced? कौन तम मन भीतर आंसर आछि काहे कि सेटा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हबनी सर दीटा का चार्ज पार्टिकल टच करे नथिवे से किछि काइनेटिक एनर्जी आस्तिला आस्ते आस्ते वेलोसिटी कमी गला रेस्ट को रहला पुणे थे रिटर्न करी पळेला मते को मने कर तार काइनेटिक एनर्जी बहुत कम थांदा तले एबे से जति डिस्टेंस से आसी सेति डिस्टेंस से आस्तांदा No, sir. No, sir. रिटर्न करी कोन करथांदा पळैथांदा आगुरु पळैथांदा फिर आगुरु रिटर्न करी पळैथांदा त माने का सेठु न्यूक्लियस स्टार्ट सीए जोठु रिटर्न करी जीवो कोन सेठु न्यूक्लियस स्टार्ट No, sir. तो लागुनी न लागले भी देखिबा रदरफोर्ड कोन करिछन हम से विषय डिस्कशन करिबा हला त रदरफोर्ड कोन करले वर्तमान एबे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच केमति बाहर करले डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहले से कहले मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस and the alpha particle which is coming through the central line minimum distance between nucleus and the alpha particle which is coming through the central line सेटा को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोली कहले तल डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वर्तमान हम एक्सप्रेशन बाहर करिबा देखो केंट बार के बहुत सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पके द बस सल्ला काइनेटिक एनर्जी रे आसीथिला से को एनर्जी रे कन्वर्ट हो गेला पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल इज कन्वर्ट हो गेला तो काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल तो काइनेटिक एनर्जी रे एक्सप्रेशन कोन काइनेटिक थाउ नले ओके यानी पोटेंशियल इज एक्सप्रेशन कोन को टिके मने पका एटा इज बहुत दरकार पड़िबो Q1 Q2 दिटा चार्ज पार्टिकल r डिस्टेंस सेपरेशन थिले सेमान को पोटेंशियल फॉर्मूला कोन थिला सेकंड चैप्टर पढ़थिला Q1 Q2 by R. Q1 Q2 by R. जो मानकर मने पडुनी सन गुटी मन पकई दोची खाली दीटा पार्टिकल न तीनटा पार्टिकल में बाहर करथिला चारटा पार्टिकल में बाहर करथिला न्यूमेरिकल भी आस्तला तार हला मन पडुची 1 को 2 1 को 3 1 Yes, को sir. 4 Yes, 2 sir. को 3 Sir. एक कथा कहथिली हला एटिकल दीटा पार्टिकल कथा पडुची k q1 q2 by r एग्जैक्ट से कथा मोटे यूज कर देखो k q1 माने गोटे चार्ज रो चार्ज केते गोटे कर चार्ज केते 2e 2E. 2e आ गोटे कर चार्ज केते Z. zd ZD. zd डिवाइडेड बाय सेपरेशन केते समान को भीतर जतले पूरा पाखो पळे असला सेपरेशन केते गेला R naught. R naught. R naught. ए बुझ पहले मो फॉर्मूला केन यूज करली k q1 q2 by r तले r naught इज इक्वल टू मु k टा को पुट कर दोछु 1 by 4 pi epsilon naught 1 by 4 pi epsilon naught 2 zd square divided by kinetic energy any doubt No. this is r naught okay this is the expression of distance of closest approach r naught is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2 zd square divided by k ओके जहां रदरफोर्ड कैलकुलेशन करथिले सी भी कोन करथिले ना से काइनेटिक एनर्जी केते नैथिले तार जो अल्फा पार्टिकल आस्थिला सेटा काइनेटिक एनर्जी को नैथिले सी जहां काइन किछि नैथिबे से समय हला से मेजर करछन तांगर सी कहले काइनेटिक एनर्जी नैथिले 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ कोन करथिले जेड काइनेटिक तो माने पाई गेलो 1/4 पाई लो वैल्यू तुम जानिछो स्मॉल ई रो वैल्यू जानिछो जेड रो वैल्यू भी जानिछो गोल्ड रो एटॉमिक नंबर केते गोल्ड रो एटॉमिक नंबर केते 79 79 पुट कर दियो ओके
पुट कला परे तमे r नॉट रो वैल्यू सी पाइले 30 into 10 to the power minus 15 meter which is nothing but 30 फॉर्मी बा फेम्टोमीटर वैल्यू कथा छाड़ जहाँ आसुची आसु बट एटा तो एटलिस्ट जना पड़ी गला कि न्यूक्लियस रेडियस टा को ऑर्डर न्यूक्लियस रेडियस हे गला 10 to the power minus 15. minus minus 15. minus 15 meter order रेडियस न्यूक्लियस रेडियस होची 10 पर minus 15 meter order आको समस्त मन रख आ एटम रो साइज होची को ऑर्डर एटम टा को ऑर्डर 10 पर minus 10 meter order एटम टा एंगस्ट्रॉम ऑर्डर पिला माने एमती मन रखि दियंती आ न्यूक्लियस टा फॉर्मी ऑर्डर ये एंगस्ट्रॉम को नाम जाईची से फॉर्मिंग को नाम जाईची दी जण रेपुटेड साइंटिस्ट होला जण एंगस्ट्रॉम जण फॉर्मी राइट ताने तो तुम अनुमान कर परथु एटम रो केते स्पेस एम्प्टी बहुत स्पेस एटम रो एम्प्टी केते फांका रहलानी एटम रो स्पेस सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेशन करके से या पाइथिले द फॉर्मूला पकेला पर तुम पाइबो मो डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखि देती तुम निजे पुट करके टेस्ट करिवो होला तो ये क्वेश्चन को तो सब बेले एग्जाम रे आसे कौन से क्वेश्चन टा लेट्स सी क्वेश्चन हला व्हाट हैपेंस टू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच if kinetic energy of alpha particle becomes double again listen what happens to distance of closest approach formula तुम आखि आगे formula को देखो if kinetic energy of alpha particle is double okay So it becomes very important question always comes in exam So it becomes half the distance of the closest approach. how much it will be Sir, half. sure all are telling half all are telling half yes first the relation between them r not out k bhitar relation ta ki relation directly na inversely 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 proportional. inversely जदि काइनेटिक एनर्जी टा डबल हे जिवो ताल तो ऑब्वियसली हाफ नॉट हाफ हे जिवो ना दिस क्वेश्चन ऑलवेज कम्स इन एग्जाम तार माने कोन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस टा काइनेटिक एनर्जी ऊपर डिपेंड करूची ना रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज फिक्स से आ ऊपर डिपेंड करबनी अंडरस्टूड से आ ऊपर डिपेंड करबे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज फिक्स ओके तो जहां भी हो ठीक है आईडिया हमको मिल गला रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऊपर तो ए जो कैलकुलेशन रदरफोर्ड करके रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एमती बाहर करथले तपर आउ गोटे टर्म कथा भी रदरफोर्ड कहितले kinetic energy increase हेले radius of nucleus half हबो कि नै अपन कहले माने रिलेट हबनी चाहेले भी गोटे रहबो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हाफ हे जिवो किंतु रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कोन चेंज होबो no sir no no yes yes रेडियस ऑफ न्यूक्लियस तो चेंज होबो ना कानी न्यूक्लियस रेडियस सहित आरो काइनेटिक एनर्जी कोन रिलेशन न्यूक्लियस रेडियस इज फिक्स हला सेटा हम नेक्स्ट चैप्टर पढिबा तार आ सहित किछ रिलेशन नै किंतु पाखा पाखी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दिटा ऑलमोस्ट समान हो पाखा पाखी मैच कर जाउची हो बुझेला तो ये गला कोन हमर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तापर हम जिबा इंपैक्ट पैरामीटर नेक्स्ट लेख समझते इंपैक्ट पैरामीटर तल कौन इंपैक्ट पैरामीटर का को इंपैक्ट पैरामीटर बोली कहते ओके what is called impact parameter so what is impact parameter let's see एबे टिके पूर्व डायग्राम करथली एटा थिला न्यूक्लियस एटा ऑब्जर्वेशन नंबर 1 थिला ना गोज ऑन डेविटेड एटा ओटा ऑब्जर्वेशन नंबर थिला जे कि स्कैटर थिला एंगल एटा ओटा ऑब्जर्वेशन थिला स्कैटर थि मोर एंगल ए लाइन टा थिला को लाइन कोन देखू which line central line ये थिला central line of the nucleus right एटा central line थिला impact parameter definition को समस्त मन देखि सुनो it is the perpendicular distance तमने एटा डिस्टेंस ता का भीतर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ए लाइन रो डिस्टेंस नबा
distance from the central line of the nucleus रो central line में distance नबा कोठी की ना to the initial velocity vector of alpha particle to the initial velocity vector of alpha particle एटा सब initial velocity vector तापरे बाजिला परे स्कैटर हला परे से के कोडे जाई छंती दैट डजंट मैटर से जोडे जाउ छंती जानतु बट हमर एडा तो सब इनिशियल वेलोसिटी ना एला एपट साइड रे जोडा अछि एला एपट साइडटा बट एपट साइडटा स्कैटर हला परे जोडे जाउ छन जानतु परपेंडिकुलर डिस्टेंस ता माने दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर स्मॉल b द सिंबल एबे बुझिला कोन कहले what is impact parameter perpendicular distance go to perpendicular distance ne haba from the central line of the nucleus to the initial velocity vector initial velocity vector तम जहा को impact parameter कहि परिबो आ जो जणा पडुची impact parameter angle of scattering सहित किछु गोटे भलो रिलेशन आसुची देखो देखो कौन भलो रिलेशन आछ एंगल ऑफ स्कैटरिंग सहित तमे को मु किछि फार्मूला देनी तमे खाली एक्सपेरिमेंट देखि के संग संग कहि दबो ये जो सेंट्रल लाइन रो इंपैक्ट पैरामीटर केते ए लाइन टर जाठो डिस्टेंस मेजर करा होची से लाइन रो केते इंपैक्ट पैरामीटर निजे तार जीरो गुड तार 0 तार एंगल ऑफ स्कैटरिंग केते 180 180 सर 180 गुड 180 पूरा परफेक्ट फेरी जाई छी पछन तमे एटा एक्सपेरिमेंट रो तमे निजे कहले बा जहा को देखले भी से जने कहि दबो हला जोटा बहुत दूर रे अछि त बीटा बहुत अछि तने ताको मैं इनफाइनाइट नै अछि बहुत लंबा अछि तो हमें ताको इनकम कंपैरेटिवली सेटा इनफाइनाइट बोली नै आजिबो पर तार एंगल ऑफ स्कैटरिंग केते जीरो इंपैक्ट पैरामीटर गोटे फार्मूला टे रदरफोर्ड देले जोटे कि डेरिवेशन तम मानकर नाही पर तुम खाली मन रखि दे जदी फार्मूलाटा मन रखिया भी दरकार नै 1/4 pi epsilon naught zd square cot phi by 2 divided by kinetic energy से एमती गोटे फार्मूला टे देले के रदरफोर्ड cot phi by 2 divided by k गोटे फार्मूला एंटर हला ए फार्मूला देखि तमे बतन को फार्मूला को ए ऑब्जर्वेशन से तो मैच कराओ मैच होची ना होनी गोटे काम करो फाइ जगह रे 180 पकेलो केते असला cot 90 cot 90 रे वैल्यू केते 0 0 गेला तारे मैच फाइ जगह रे 0 पकेलो cot 0 रो वैल्यू केते इनफाइनाइट ताने पूरा ऑब्जर्वेशन को एक्सपेरिमेंट माने मैथमेटिकल कैलकुलेशन को एक्सपेरिमेंट पूरा मैच करके अछि हला सो दिस इज द इंपैक्ट पैरामीटर एग्जाम रे थर गोटे क्वेश्चन आसीतला एमती गोटे फिगर दे देला एमती एटा बी लिख देला एटा फाइ लिख देला हला से कहला जे कोटा इंपैक्ट पैरामीटर व्हिच वन इंपैक्ट पैरामीटर खाली लिखिबार देला बी इज इक्वल टू इंपैक्ट पैरामीटर आ किछ नै व्हाट बी इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर खाली एतिक थिला बहुत सहज जिंस ना तापरे रदरफोर्ड जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ रे बुलुच बोली कहिले से तार रेडियस को बाहर करथिले जो रेडियस रे बुलुची रेडियस रे एक्सप्रेशन बाहर करथिले से इलेक्ट्रॉन एनर्जी भी बाहर करथिले जोटा कि तम माने बुक रे पाइबो किंतु बहुत पिला ताको नेग्लेक्ट करंती प्रैक्टिस करंती बा सेटा को देखंती पर थरे एग्जाम रे एटा पड़ी गला रदरफोर्ड को मॉडल रे इलेक्ट्रॉन एनर्जी बाहर करो किंतु पिला माने अक्वांटेड अछन बोर्स मॉडल रे बाहर करबा सब पिला माने फसी गेले सेतरे सो बोर्स रो करि पकेले हला ठीक अछि देखो हमें बता रदरफोर्ड मॉडल रे बाहर करबा रदरफोर्ड को कहबा कथा होची रदरफोर्ड हाइड्रोजन एटम पे बर्तन लेथिले तो हाइड्रोजन एटम रे न्यूक्लियस रो चार्ज केते प्लस गोटे केवल प्रोटॉन प्लस ई 1 गोटे प्रोटॉन तो प्लस ई आ बाकी इलेक्ट्रॉन चार्ज माइनस सी आर रेडियस रे बुलुची
इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ रे बोलिया पई को फोर्स दरकार सेंट्रीपिटल फोर्स is equal to electrostatic force of attraction. Okay, you know, centripetal force must be provided by some force. Some force must play the role of a centripetal force. So centripetal force है mv square by r आउ एटा हला केते इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टा k q1 q2 e into e by r square. Okay, by r square. तमे एटी कोन करिवो गोटे आर कटि गला खाली गोटे आर बंचिला हला आर रो एक्सप्रेशन जहा आसला k टा को तुम 1/4 pi epsilon naught पके दी परिबो 1/4 pi epsilon naught here is e square हला एटा e square हे गला right और इट into mv square just to see this expression. Is it correct? k जगह 1/4 pi square हां ठीक है Yes. ये थले तांका रेडियस रे एक्सप्रेशन एटा ही तांका रेडियस एक्सप्रेशन आउ कुछ नै आउ गोटे कथा हला एटी कोन देखो से एनर्जी भी बाहर करथिले इलेक्ट्रॉन रो काइनेटिक एनर्जी थिबो आउ को एनर्जी थिबो पोटेंशियल एनर्जी भी थिबो तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन रो केते हाफ mv स्क्वायर mv स्क्वायर कोड आसीबो देखो mv स्क्वायर ए एक्सप्रेशन आसी जीवो रेडियस तो बाहर गेला मोडे तळटा को लिभे दोछ देखो mv स्क्वायर एक्सप्रेशन आसी जीवो हला गोटे आर जदी कटि गला mv स्क्वायर ओके एटा भी तुम पुट कर दे k e square by r so this is the kinetic energy सेमती पोटेंशियल एनर्जी केता हबो टू पार्टिकल सिस्टम केता हबो k Q1 Q2 by k q1 q2 by r तो q1 ला e q2 ला माइनस e by r पोटेंशियल पकले तुम कहथि सोले माइनस साइन प्लस साइन नब एति तल सेमती टोटल एनर्जी वर्तमान ए दीटा का ऐड कर दियो दिस एंड दिस ऐड करो मते को टोटल एनर्जी केते आसीबो ऐड करले minus half k square by r. Half k square by r. Yes, sir, minus half k square by r. minus half k square by r this is the total energy ये थिला रदरफोर्ड मॉडल रो एनर्जी कैलकुलेशन और रदरफोर्ड मॉडल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जेगर मास जन केमती करले हमें डिस्कशन करले सेथरु से केमती रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बाहर करले ताको भी डिस्कशन करले तापर केमती से सेथरु डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आउ इंपैक्ट पैरामीटर विषय भी हमें जानिले तली गला हमर एनर्जी कैलकुलेशन भी गला बट रदरफोर्ड का मॉडल डिमेरिट थिला भूल थिला कोन भूल थिला रदरफोर्ड का मॉडल समस्त को जाना से मिस्टेक 11th क्लास रो हां किछ न लेति की सुनथिबो हला द मॉडल इज कोलैप्स्ड कैन एनीबॉडी टेल मी Sir could not prove the stability of the Explain the atom. stability of the atom. Sir, because Rutherford failed to explain the stability of atom सेटा म आरंभ रो कहि सैलेनी बट एग्जैक्टली से स्टेबिलिटी को कोन बुझी पर नथिले sir, Could not explain the position of electron and proton in atom. the electron revolving in the orbit somehow discrete some energy, and those energy were not explained by Rutherford. सुनो गोटे एटे भलो कथा सुनो बतन कहूची हम गोटे पॉइंट चारि पटे केतरा सर्कल टाणी परिबा Infinite. रदरफोर्ड से कथा कहथिले से कहले गोटे पॉइंट्स गोटे न्यूक्लियस चारि पटे हाउ मेनी ऑर्बिट्स आर पॉसिबल Infinite or इनफिनिटी से तो जोठी पारिबो सेठी ऑर्बिट बनै पारिबो और जोठी पारिबो इलेक्ट्रॉन सेठी जंप करि पारिबो इलेक्ट्रॉन सेठी बुली पारिबो रिवॉल्व करि पारिबो से सेटा ही मिस्टेक कर देथिले तांको हिसाब रे ऑर्बिट होची कंटीन्यूअस तांको हिसाब ऑर्बिट कंटीन्यूअस पूरा तांको सियाउ ए जिनसटा आईडिया कर नथिले
ना जे इलेक्ट्रॉन जहाँ बोर पछरे कहिथिले रदरफोर्ड को मॉडल और बोर्स मॉडल भितरे सुनो बोर्स मॉडल भी से बोर से समान कथा कहिसंती से न्यूक्लियस कथा कहिसंती जहाँ रदरफोर्ड कहिथिले से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ रे बुलियो बोली कहिसंती जहाँ रदरफोर्ड कहिथिले तो दीटा का मॉडल भितरे फरक टा कोन थिला मेन डिफरेंस टा कोन थिला हु कैन टेल मी व्हिच वर्ड इज द डिफरेंस बिटवीन द टू मॉडल्स देखि होल फिजिक्स को बदलै देला 1900 ପରେ Bohr said it have energy levels of n multi 2 n बोर multi. कहले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सरीपटे फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट रे बुलिबो रदरफोर्ड कहले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सरीपटे एनी सर्कुलर ऑर्बिट रे बुलिबो तले डिफरेंस तले गोटे वर्ड रो रदरफोर्ड कोन यूज करथिले को वर्ड Any. जे कि तांको प्रॉब्लम रे पके देला किंतु सेटा को रिप्लेस कर देले बोर को वर्ड रे Fixed. नोबेल प्राइज नै कि पळेले हला सतर नै कि पळेले नी ताको नोबेल प्राइज दिया गला ता परे भी बहुत कैलकुलेशन से करिसंती हला तो नियला रदरफोर्ड मॉडल एंड बोर्स मॉडल बेसिक डिफरेंस जदी इलेक्ट्रॉन ता मन इच्छा जोटी परिबो सेठी बुली परिबो इलेक्ट्रॉन गोटे चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ रे बुलच माने से ऑसिलेटेड होची टिकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर कथा मने पकेइलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर रे तमने पढितिलो गोटे इलेक्ट्रॉन केतेबेले एनर्जी एमिट करे बा गोटे चार्ज पार्टिकल केतेबेले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छाडे व्हेन इट इज In fixed orbit. व्हेन इट इज को कंडीशन रे ही पर्टिकुलर वर्ड की कहबो व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज In motion. Accelerated. yes very good accelerated when the charge particle is accelerated it then only radiate energy in the form of electromagnetic radiations accelerated charge particle electron जरी circular path रे बुलुची से accelerated होउछ ना होनी Hauchi, sir. Yes, sir. सर्कुलर पाथ रे बुलिला माने ही एक्सेलरेशन आसीबो एमिति कोड दुनिया रे सर्कुलर पाथ मोशन नाही जोति के एक्सेलरेशन जीरो हो जिवो तो एक्सेलरेशन आसीबो ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन एटलीस्ट एक्सेलरेशन आसीबो तो एक्सेलरेशन अछि माने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एमिट करूची से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एमिट करूची माने ग्रेजुअली इट कम्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस आस्ते आस्ते एनर्जी कम्प्लीट न्यूक्लियस रे आसीबो लास्ट को फॉल्स ऑन द न्यूक्लियस एंड द मॉडल इज कोलैप्स्ड According to electromagnetic theory, oscillated charged particle emit energy in the form of electromagnetic radiations. As electron is revolving around the nucleus, so it emits energy, gradually comes towards the nucleus and falls on it. So the model is collapsed. Understood? ये थिले तंकर बड़ डिमेरिट्स डिमेरिट को रेक्टिफाई करिकी नेक्स्ट हु इज द ग्रेट मैन केम Bohr. Neil Bohr proposed the atomic model based on which theory Quantization. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी देला परे आइंस्टाइन डुअल नेचर आइंस्टाइन फोटोन इफेक्ट को बुझेइथिले जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी देला परे बोर तांका मॉडल देथिले मैक्स प्लैंक को माने समस्त थैंक यू कहला कथा से क्वांटम थ्योरी देला परे बोर से क्वांटम थ्योरी यूज करिकि तांकर मॉडल को प्रपोज करला and overcome all the demerits of Rutherford's atomic model. Okay. तले बोर्स मॉडल रे तांकर पोस्टुलेट्स बोर्स मॉडल बोर्न कर पोस्टुलेट कोन थिला व्हाट आर द डिफरेंट पोस्टुलेट्स फॉर बोर्स एटॉमिक मॉडल ला पोस्टुलेट्स सब कोन थिला सो लेट्स सी द पोस्टुलेट्स तांका पोस्टुलेट्स उडा तमन को देखिए को पड़िबो डायरेक्ट बुक रे इटैलिक लेटर रे तांका पोस्टुलेट्स सब लिखा हैची ओके बुक रे इटैलिक लेटर तांका पोस्टुलेट्स लिखा हैची तांका पोस्टुलेट्स तमने इचो देख परिबो right see italic letter जोड़ा लिखा है जो उसका postulate direct you can write from the book okay good postulates are there what are the postulates first postulates please someone read only italic letter
Bohr's first postulate was that an electron in an atom could revolve in certain stable orbits without the emission of radiant energy. Stop. Contrary. Stop. That is the postulate. Okay. I told only italic letter. Okay. So Bohr's postulate was that an electron in an atom could revolve in certain stable orbit without emission of radiant energy. In exam, गोटे postulate half mark थिबो कि नहीं तमे काहे के एते लिखिबो तमे केवल सेति लिखिबो हला ताकू ही कहंती स्टेशनरी स्टेट बा ताकू कहंती फिक्स्ड ऑर्बिट हला बा जब जहां ना दे परिबो ओके कॉल्ड एज अ स्टेशनरी स्टेट बोली ताकू कहंती ठीक है इट इज कॉल्ड एज अ स्टेशनरी स्टेट ऑफ एटम but italic letter only this much sufficient. Everybody, I hope understood what I told the difference. Yes. Yes. So, एनर्जी एमिट करिबनी सर काहे कि इलेक्ट्रॉन काहे कि रेडिएंट एनर्जी एमिट करिबो काहे कि ना से जदी एनर्जी एमिट करिवो ताले एनर्जी एमिट करले से कंटीन्यूअसली एमिट करिवो कंटीन्यूअस एमिट करले से ता जस्ट ता तळको खसिबो बट ता तळको तार ऑर्बिट पॉसिबल नुह तो बोर कहले देखो रदरफोर्ड को भले से आ कहलेनी सी कहले सपोज एठी न्यूक्लियस अछि से कहले एठी केवल ऑर्बिट पॉसिबल ए मझी जगह ऑर्बिट हे परिबनी तापरे एति की गैप रे कहले नेक्स्ट एठी ऑर्बिट पॉसिबल मझी रे एठी ऑर्बिट पॉसिबल नुह ओके तेनु से कंटीन्यूअसली एनर्जी एमिट करि परिबनी से एनर्जी जतले एमिट करिवो ए गैप पर ही एमिट करिवो दैट इज कॉल्ड एज फोटन जोटा गोटे इन द फॉर्म ऑफ ए फोटन से एनर्जी को एमिट करिवो एमिट करले सीधा ए ऑर्बिट को आसीबो अंडरस्टूड श्योरली हां तो किंतु श्योरली एमिट करूथबो बट किंतु सेति की एनर्जी गैप रे सेमिति सेति की एनर्जी एमिट करले डायरेक्ट एठी आसीबो जदि सेति की एनर्जी से एमिट करूनी तले से आस परिबन विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी ले से पाथ रे बुलिबो दैट इज अ स्टेशनरी स्टेट बोली से पे से ताको नाम देले हला बस स्टेबल ऑर्बिट बोली से ताको नाम देले नेक्स्ट पोस्टुलेट please read only italic letter. this postulate states that the electron revolves around the nucleus only in those orbits for which angular momentum is some integral multiple of h by 2 pi, where h is the Planck's constant. Okay. So it is a orbit को quantized कर देले हमें जो कहले मझिरे मझिरे ऑर्बिट पॉसिबल नुह काहे की पॉसिबल न से सेई कथरे को एथरे बुझेले से कहले मझिरे मझिरे ऑर्बिट पॉसिबल हबो नाही काहे की पॉसिबल हबो नहीं बिकॉज़ देयर आर सम कॉज कोन कॉज से कहले ए कंडीशन जोडी छोटी सैटिस्फाई करूथबो सेठी केवल ऑर्बिट हे परिबो को कंडीशन क्वांटाइजेशन कंडीशन ताको कहंती बोर कर क्वांटाइजेशन कंडीशन तो बोर को क्वांटाइजेशन कंडीशन कोन हला ना एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ angular momentum is integral multiple of h by 2 pi nh by 2 pi. integral multiple of h by 2 pi but Bohr is the second postulate is very very important question exam रे सब बेले क्वेश्चन आसे exam रे सब बेले आसे जे prove Bohr's quantization condition is a very common question in exam देखो सेटा को हम बतन prove करबा Bohr कर quantization condition how we will prove this quantization condition now let's see एटा न्यूक्लियस मते को एटी इलेक्ट्रॉन दा पार्टिकल ना इलेक्ट्रॉन दा वेव सर वेव इलेक्ट्रॉन दा पार्टिकल ना वेव Particle. both so then electron is a wave as well as electron is particle okay तो हमें इलेक्ट्रॉन वेव नेचर को नहीं कि से प्रूव करिथिले पार्टिकल नो वेव इलेक्ट्रॉन को की भी देखि जे एंती पार्टिकल टा बोली तला इलेक्ट्रॉन स्पीड बहुत बेसी हमें कैलकुलेट करबा हला से कोडो देखा जे इलेक्ट्रॉन तो वेव टाइप रा एमती इलेक्ट्रॉन माने एमती दिस इज इलेक्ट्रॉन यू सी तुमके फिगर भी ड्रा करियो पड़बो एग्जाम रे हला एटा इलेक्ट्रॉन जाउस कोन जाउस ना इलेक्ट्रॉन जाउस राइट अंडरस्टूड दिस इज इलेक्ट्रॉन जरे इलेक्ट्रॉन हला तले होल सर्कमफेरेंस केते ना 2 पाई आर से निश्चित किछि गोटे त लांबडा हबो काहे ना वेव तो कंप्लीट हबो तरी वेव ता कंप्लीट हबो
से सम टाइम्स ऑफ लैम्बडा स्क्वायर हो एडी देखो बर्तन तमे एटी 1 एटी केतरा 1 2 3 4 5 6 7 8 केता असला 8 9 10 ओके 10 टा लैम्बडा हला एटी वर्तमान सेमती केतले 5 लैम्बडा केतले 4 लैम्बडा हो केतले 3 लैम्बडा हो सेट में 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्बडा जदि एई कंडीशन जोट सैटिस्फाई करे सेठी ऑर्बिट है अदरवाइज ऑर्बिट नॉट एट ऑल पॉसिबल ओके लैम्बडा जगह से कौन कले डी ब्रोइन का फार्मूला को यूज कर देले कौन थिला डी ब्रोइन का फार्मूला ओरिजिनल फार्मूला मते को लैम्बडा इक्वल टू h by mv. by mv okay that implies that mvr is equal to nh by 2 pi angular momentum is integral multiple of h by 2 pi now is it clear बुझेला कौन कहली this is the postulates proof of Bohr's second postulate फिगर हाफ मार्क प्रूफ रे 1 हाफ मार्क टोटल 2 मार्क्स रो प्रूफ सब बेले एग्जाम रे आसे करियो प्रूफ समझते Yes. understood okay now we'll go to the third postulate of Bohr see third postulate of Bohr please read anybody please read So the third postulate incorporate into atomic theory the early quantum concept that had I been told developed, only italic letter that had been developed by Planck and Einstein. It states okay only it says that an electron might take a transition from one of its specified non-radiating orbit to another lower energy. When it does so, a photon is emitted having energy equal to the energy difference between the initial and final state. The frequency of the emitted photon is given by hv is equal to ei minus ef. that's not hv that is h nu H nu nu, is the sorry sir. frequency nu is the Yes. frequency okay Yes. तामाने तो हमें एमती भी चाइले लिख दे परिवा when an electron jumps from higher energy level to lower energy level okay it radiate photon or it emit a photon okay of energy h nu is equal to ei minus ef तुमने गोटे ऑर्बिट रो आ गोटे ऑर्बिट को से जंप कला माने से जो गैप टा जति रहला सेति के एनर्जी से इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन कोन करिवो एमिट करिवो येला थर्ड पोस्टुलेट केबे हमें बोर्न कर पोस्टुलेट को यूज करिकी इलेक्ट्रॉन रो तो सर्कुलर पाथ रे बुलुची से ऑर्बिट रो रेडियस इलेक्ट्रॉन रो वेलोसिटी टाइम पीरियड तार फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन तापरे तार एनर्जी केते रेडिएट करिवो गोटे ऑर्बिट रो गोटे ऑर्बिट जंप करले हमें सब कैलकुलेट करबा नाउ विल गो टू द थ्योरी ऑफ अ बोर्स पोस्टुलेट लेट्स मूव टू द थ्योरी ऑफ अ बोर्स पोस्टुलेट फर्स्ट थ्योरी सी first let's calculate radius first हमें radius calculate करिबा centripetal force is equal to electrostatic force जहां रदरफोर्ड करथिले ये भी से कथा कहिथिले अच्छा हां एठी कोन हला न्यूक्लियस रो चार्ज केते मुने बेठी प्लस JD. प्लस जेडी न्यूक्लियस रो चार्ज हला प्लस जेडी आ जते बेले बुलुची से सर्कुलर पाथ रे रेडियस टा आर आ इलेक्ट्रॉन हला माइनस ई जेडी काहे नेली बुझेला मु बर्तमान जनरल एटम पे करूची तापर तक स्पेशल केस पकि कि हाइड्रोजन एटम को जीबी ओके बट तमरे एग्जाम रे क्वेश्चन पडिले सबले हाइड्रोजन एटम ही पड़े ओके जेटा प्राय न थाए किबा जदि छिबो तुम जेड जगह रे 1 कर दबो हाइड्रोजन पाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²r इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स केते इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के JD square by R square. ZE into E by R square इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बुझि पाछो समझते कूलम्ब्स लॉ इट पडुची फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर का कांसेप्ट यूज करा होची सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 by R square तो एटे r कटि गला mv² असला k zd² by r this is equation number 1
गॉट इट इक्वेशन नंबर 1 बुझ पहले समस्त कोन कहले टी रेडियस गला रेडियस बाहर इन हमर एटा गोटे एक्सप्रेशन बाहरला एटा इक्वेशन नंबर 1 दियो बोर कर क्वांटाइजेशन कंडीशन पोस्टुलेट टा कोन थिला मैथमेटिकल फॉर्मूला कोन थिला फ्रॉम बोर्स सेकंड पोस्टुलेट equal to NH by 2 pi. by 2 pi. mvr is equal to ns by 2 pi ताले हमको दरकार रेडियस गोटे काम करे इथरो v टा को बाहर कर दियो ताकू नै की पुट कर दियो इक्वेशन नंबर 1 रे v हला ns by 2 pi mr इक्वेशन नंबर 2 पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 समस्त पुट करो पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 समस्त एटा को भल्ला भाबे लेख निजे निजे कॉपी रे करो और रेडियस रे एक्सप्रेशन केते आसिला मते कहो दैट्स योर ड्यूटी पेशेंस दर की करिया पड़ियो टिके एफर्ट सपोर्ट हे गेला माने भूल हे जिवो टिके एफर्ट सपोर्ट हेले भूल हे जिवो इक्वेशन 2 को ने की इक्वेशन 1 ने पुट करो k प्लेस रे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दियो वर्तमान k प्लेस रे बे 1/4 पाई एप्सिलॉन पुट कर दियो और मते कहो r रे एक्सप्रेशन कोन आसिला टेल मी क्विक डू इट टेल मी द एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस what you got tell me Sir, n square h square by Square d by square into pi mn square. this much all are agree Yes, sir. Yes, sir. yes sir. so this is equation number 3 जदि कार न आसी छी तुम चेक करो कोडी कोन भूल भाल गला एटा ही तो फाइनल एक्सप्रेशन okay so this is the radius expression तो radius expression रे जदि मु n square और z को हटै दोची means first orbit of a hydrogen atom for first orbit of a hydrogen atom z is equal to 1 n is equal to 1 आ बाकी जहा आसला सेटा गोटे कांस्टेंट ता देखा पाई m e स्क्वायर सब कांस्टेंट ता आको जे तुम कैलकुलेशन करबो केते आसीबो को मते वैल्यू फैल्यू जदि तुम पकेबो तुम निजे पक्की की वैल्यू देखिबो तुम जानि छ प्लांट्स कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट e पाई m सब कांस्टेंट तुम जानि छ बट द आंसर भी जानि छ तुम केमिस्ट्री डिग्री सुनी थिबो को केते एबे देखला पर जाने पड़थबो तुम Yes, sir. केते 0.53 angstrom which is called as Bohr radius आको Bohr radius बोली कहंती Bohr आको कैलकुलेट करथले इट्स कॉल्ड Bohr radius हैला तो तमे कोन करबो बे रेडियस रे एक्सप्रेशन रे जो rn आसिला एनी ऑर्बिट एक्सप्रेशन रेडियस एक्सप्रेशन रे n स्क्वायर z को छाड़ देले बाकी 0.53 तो 0.53 into n square by z angstrom इटला शॉर्टकट फार्मूला टू फाइंड रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट दिस इज द शॉर्टकट फार्मूला तमे फार्मूला यूज करिकी तमे ए फार्मूला यूज करिकी रेडियस रे एक्सप्रेशन बाहर करियो शॉर्टकट फार्मूला दिस इज जेतेबेले न्यूमेरिकल पचरा हबो जे ए एटम रो हाइट माने हीलियम एटम रो सेकंड ऑर्बिट रेडियस केते तमे कोन करिवो ना ए फार्मूला को यूज करियो तमे भाबुछ ए फार्मूला को यूज करके तमे केबे भी एग्जाम हॉल कैलकुलेशन करी बाहर करी पारिबो केबे भी पॉसिबल ना सेटन तुम एटा को मन रखिबो एटा को मग अप कर दबो 0.53 n स्क्वायर बाय z सेकंड ऑर्बिट अदर हीलियम एटम हला जे जगह पर डेवलप हाइड्रोजन हीलियम जे जगह 2 पके देले यू विल गेट योर रेडियस ओके रिमेंबर दिस बट आउट जिंस बिट मार्क कलो रेडियस हाउ डिपेंड्स ऑन n स्क्वायर directly proportional. n स्क्वायर कना r1 by r2 is equal to n1 square by n2 square तुमको जदी दीटा एटम रो दीटा ऑर्बिट रेडियस रेशियो पचरा हबो तो रेडियस रेशियो बाहर कर दे पारिबो सो दिस इज अबाउट द रेडियस ऑफ एटम सला नेक्स्ट विल मूव टू यस सर अपन r n के लिखते हैं n एनी ऑर्बिट रो से rn लिख देले हो एनी ऑर्बिट रो तो से rn लिख देले अंडरस्टूड यस हला तो बर्तन हम डिस्कशन करबा वेलोसिटी लगा ताल समझते हैं नेक्स्ट दिबा में वेलोसिटी को
बा स्पीड बोली भी कहले चलिबो वेलोसिटी कहले चलिबो जहा कहले भी चलिबो हला वेलोसिटी बाहर करबो देखलो वेलोसिटी केम बाहर करबा बहुत सहज एट तो वेलोसिटी ऑलरेडी अछि ना खाली आर ता प्रॉब्लम करू छै इक्वेशन 3 को लेके इक्वेशन 2 रे पुट कर दियो लगा पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 putting equation 3 in equation 2 find the expression as quick as possible questions धर की करा टिके एपट सेपट गला माने सब भूल जिवो and final expression of v I want final expression of v put equation 3 in equation 2 tell me the final expression of z final expression of velocity v is equal to Z square by 2 epsilon naught nh NH. this is equation number 4 got it velocity expression equation number 4 this is velocity similarly for fast orbit of hydrogen atom for a fast orbit of hydrogen atom z is equal to 1 n is equal to 1 for fast orbit of hydrogen atom what is the value of v for fast orbit of hydrogen atom Tesla calculation re v 2.18 into 10 to the power 6 meter per second. Can you imagine the speed? Can you imagine the speed? How much it is? ताले इलेक्ट्रॉन को तुम केबे देखि परिबो? Okay, so it looks like wave बळिया देखा वाला इलेक्ट्रॉन wave खाली गोटे शैडो टाइप रो स्ट्रक्चर ही देखा जाए और इलेक्ट्रॉन को एमती केबे देखि ना तो ता स्पीड देखो 10/6 मीटर पर सेकंड इलेक्ट्रॉन स्पीड. So velocity is coming this much now देखो velocity expression भी हमें सब शॉर्टकट कर दबा 2.18 into 10/6 जा एग्जाम रे तमे करिवो z by n मीटर पर सेकंड तमे एटा को मन रखिवो यदि कहबो जे को ऑर्बिट रो वेलोसिटी बाहर करो ओके कार्बन एटम रो सेकंड ऑर्बिट रो वेलोसिटी बाहर करो z जगह रे 6 पके दो n जगह रे 2 पके दो वेलोसिटी बाहर गला हला यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला हाउ वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन n directly or inversely Inversely proportional. that means electrons move slow or fast in higher orbits Slow. slow in higher orbit so velocity विषय रे हमको एक्सप्रेशन मिल गला so now we'll go to time period time taken by the electron to complete one revolution is called as a time period गोटे रिवोल्यूशन कंप्लीट करे पे जो टाइम लागिवो ताको टाइम पीरियड बोली कहंती नहीं so let's find the time period distance केते कवर करथिबो 2 pi r speed केते v distance la 2 pi r speed hela v so this is the time period right distance by speed one complete revolution एबे r एक्सप्रेशन आनी के पुट करो इक्वेशन नंबर 3 रू v रो एक्सप्रेशन आनी के पुट करो इक्वेशन नंबर 4 रू and have patience and do and tell me the final expression of the time period quick equation 3 और 4 को आने की time period रे पुट करो and tell me the final expression of time period tell me the expression of t So 4n cube h cube epsilon naught square 4n cube h cube epsilon square by z divided square by yes z square e to the power 4 yes n. and this much all are agree Yes, sir. okay so this is the expression of the time period right this is the expression of more is the number of orbits more is the number of orbit more is the time period t proportional to n cube t proportional to n cube. Let's find the frequency now so frequency what is frequency definition the reciprocal of Time period. means number of revolutions made in 1 second nu is equal to 1 by t okay then the expression da khali ulte dile kaam salla this is frequency z square e for them 4 n cube h cube epsilon naught square so this is the
expression of a frequency. Okay, understood? हाँ କିଛି more simplified ନାହିଁ कौन है कह ସେଠି କିଛି more simplified formula ନାହିଁ ना 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 simplified किसी दरकार नहीं थे एटा दरकार पड़े नहीं किसी से तो मैं खाली expression ला तो मन को ठी कह देली. Okay, so now I will go to the energy of the electron in the orbit. इलेक्ट्रॉन सब कौन कौन एनर्जी थिबो मत टिके कहला इलेक्ट्रॉन रा कौन एनर्जी थिबो काइनेटिक आगन थिबो गोटे काइनेटिक थिबो आ गोटे कोन थिबो Potential. पोटेंशियल थिबो तले काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बाहर करबा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एबे बाहर करबा हाफ mv² इक्वेशन 1 रे mv² केते थिला टिके मन पकेला टिके इक्वेशन 1 बोल्टी के देखो mv² केते थिला K is AD square by R. K z² by r येला काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला एटी गोटे zd आ गोटे माइनस c तो पोटेंशियल फॉर्मूला कोन हबो K q1 q2 by r तो माइनस K zd² by r इक्वल इक्वेशन नंबर 2 पड़ा पहुंच तो टोटल एनर्जी minus half good K zd² by r this is the total energy एबे देखलो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी भीतर गोटे रिलेशन आसला ये भलरे मार्क कर और रिलेशन ता कोन आसला मते को और जो रिलेशन ता कि तमरो बहुत दरकार पड़े न्यूमेरिकल करे पई तो ताकू पूरा भल्ला में मन रखी बॉक्स करी रखि दो गोटे जगह रे ला न्यूमेरिकल पे बहुत दरकार पड़ियो. The kinetic energy is equal to minus half of potential energy. Kinetic energy is equal to kinetic total with relation को minus of Total energy. Total total energy. energy. अब potential energy is equal to Total energy. Half of total energy. minus 2t. potential energy equal to twice of total energy. Sorry, तो भले twice of भले Twice देखा of potential. total energy. अब मन रखी था इटोटे बड़ा concept हमले numerical करिवो kinetic energy is never negative, potential energy is never positive. Remember, kinetic energy री numerical अगर by chance कोटे एपट सेपट कर दिचो लास्ट कोटे माइनस साइन आछो ना तुम जबरदस्त को प्लस करके आंसर लिखिबो. kinetic energy के माइनस साइन दबनी कि potential energy के प्लस साइन दबनी. ओके potential energy सब बेले माइनस kinetic सब कारण बेले टोटल एनर्जी को माइनस लिख टोटल एनर्जी इज ऑलवेज माइनस किंतु किछि किछि क्वेश्चन देला बेले सर माने जानि कि टोटल एनर्जी को माइनस छाडी के लिख देथिबे तो जदि गोटे पिला टोटल एनर्जी को प्लस पके देला तर काइनेटिक एनर्जी माइनस रे पळे आसबो ना. ओके पिला माने भूल करी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव लिखि पळे आसन एग्जाम रे माने दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग काइनेटिक एनर्जी सब बेले पॉजिटिव रे रहबो खाली ये गला हमर कोन एनर्जी रिलेशन बट हमें टोटल एनर्जी रे एक्सप्रेशन ता पुणी लिखिबा हमें एटी कोन करबा ना रेडियस रे एक्सप्रेशन ता को पुट कर दबा पुट कर देले वी विल गेट द टोटल एनर्जी एक्सप्रेशन के जगह 1/4 pi epsilon पके दबा और रेडियस रे एक्सप्रेशन ता आउथरे पुणी इक्वेशन 3 थिला ना कोन ता कोन के पुट करा पुट करके ना यू टेल मी द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी क्विक पुट इट इथे में इक्वेशन गुडा काटी दबा इथे दरकार नै ऑलरेडी अगुर हम नंबरिंग है इक्वेशन 1 2 3 हमें इक्वेशन 3 जो रेडियस एक्सप्रेशन थिला ता कोन के इथे पुट करा पुट करके लास्ट को टोटल एनर्जी कोन आसला मते को के जगह 1/4 pi epsilon नॉट लिख दियो तो टोटल एनर्जी केते आसला मते को minus 1/8 into z square E e to the power 4 m m by n square h square epsilon naught square. Epsilon square. is this correct all are agree Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. okay so this is the expression of the total energy right so इथिरो देखो जो माने को नो आसी लिखि देबे बट तो निजे ट्राई करियो मस्ट जंते आनिया पे चेष्टा करियो
z स्क्वायर आउ n स्क्वायर को जदि हमें हटे दबा बाकी समस्त कांस्टेंट आ तमे समस्त जानिच z स्क्वायर n स्क्वायर को हटे देले सेमान के जगह रे कोन पुट कले कोन आसीबो कांस्टेंट के वैल्यू पुट कले से सब जानिच ऑलरेडी को वॉल्यूम वैल्यू एनर्जी रो टोटल एनर्जी कर्म माइनस के देसिबो 13.6 Z square by z square by n square electron volt. This is the total energy of an electron in any orbit of any atom. Okay. Why the total energy is coming negative? What the physical significance? So energy is decreasing. No. Try. attractive force. Attractive force. Electron is bound to the nucleus. Okay, negative sign indicates electron is bound to the nucleus. Exam question पड़े. What is the meaning of negative sign? एबे मु जदी हाइड्रोजन एटम पई करबी तले z इक्वल टू 1 पूरा हे गला मु केवल हाइड्रोजन एटम पई करूची फर्स्ट ऑर्बिट रे मते को एनर्जी केते आसला -36 eV. n जगह रे 2 पकेले केते आसबो सेकंड ऑर्बिट n जगह रे 3 पकेले केते आसबो थर्ड ऑर्बिट n जगह रे 4 पकेले केते आसबो फोर ऑर्बिट so these are the energy in different orbit of a hydrogen atom हम जे एनर्जी लेवल डायग्राम करिबा तम समस्त ऑलरेडी लेवल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑलरेडी ड्रा करिथिबा गुरु केमिस्ट्री रे बट स्टिल हम आउथरे पुनी फिजिक्स रे एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करिबा तो एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करले एनर्जी लेवल डायग्राम बर्तन केमते आसी एनर्जी लेवल डायग्राम एटा पूरा तळ लेवल n = 1 तापर एटा सेकंड लेवल n = 2 तापर 3 जानि छ टिके गैप कमी जिवो 4 बेल को आहुरी गैप कमी जिवो 5 बेल को आहुरी गैप कमी जिवो अंडरस्टूड आस्ते आस्ते एनर्जी लेवल एटा 3 एटा 4 एटा 5 गैप आस्ते आस्ते कमी चलेबो सो दिस आर द एनर्जी लेवल डायग्राम ओके एबे देखिबा बट इट इंपोर्टेंट जिनस मार्क कल जेते हायर ऑर्डर एनर्जी हम पळोचे ऊपर ऊपर जाउचे एनर्जी आस्ते आस्ते क्लोजनेस ता कमी जाउची और एते कमी जीवो जे ऊपर को ऑर्बिट गुडा सब कंटीन्यूअस हे जीवो ऊपर को गला परे ऑर्बिट गुडा सब कंटीन्यूअस हे जीवो बिकॉज़ तांको भीतर गैप ऑलमोस्ट नहीं तो रदरफोर्ड कोन भूल कथा कहतिले रदरफोर्ड तो सही कथा ही कहतिले ना हेले तो रदरफोर्ड जहा कहतिले दैट इज वैलिड when n is very large but n small by Rutherford valid nahi the Bohr always valid okay हो से जहा भी हो बर्तन हम गोटे काम करिबा गोटे ऑर्बिट रो आउट ऑर्बिट को जंप कले जो फोटोन से एमिट करूची से फोटोन रो फ्रीक्वेंसी तार वेव नंबर एबा हम कैलकुलेट करिबा गोटे ऑर्बिट रो आउट ऑर्बिट को जतले से जंप करिवो लेट्स कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेडिएशन ओके एटा फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन नो एटा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन हम बर्तन बाहर करिवा गोटे ऑर्बिट रो आउट ऑर्बिट को जंप कले कौन थिला थर्ड पोस्टुलेट रो फार्मूला सेटे बुझे परबे कि जो ऑर्बिट ता कंटीन्यूअस है जेता माने हायर ऑर्बिट को पळे गला माने गैप गुडा कमी गला ना यस माने आउट डिस्क्रीट किछि रहिलानी आस्ते आस्ते सब ऑर्बिट लागी गेले टू इच अदर यस सर ओके सेट पे कंटीन्यूअस हे गला तब एबे कोन करि देखो हम एटी n = हां एटी हम कोन करिबा पोस्टुलेट कोन थिला मते को बोर कर लास्ट पोस्टुलेट रो फार्मूला टा कोन थिला e I minus ef = h nu H mu. ओके
बर्तमान आम से कम करवा आम कौन करवा देख ये जगह में पुट कर दूची -1/8 टी कह लंबा एक्सप्रेशन टा -1/8 z square e to the power 4m by n square M. h square. Yes sir, m by n square h square by epsilon naught. Okay, but it have n नहीं এটা n ही गला. This is the only change I did. n এটা गला minus our minus and plus गला minus minus plus गला এটা simply z square e fourth m এটা n नहीं এটা कौन गला बर्तमान NF. NF. nf गला h square epsilon naught is equal to h nu. Yeah. Yes. Got it. कल तमे इधर बर्तमान न्यू टा को बाहर कर परिबो तो न्यू इज इक्वल टू एपटे कॉमन नहीं जाओ 1/8 z square e fourth m by h square epsilon naught square एटा h न्यू हां तर 1/nf square minus 1/ni square पहले imply that into न्यू बाहर गला z square e fourth m by 8 h cube epsilon naught square then this much. Okay, right, 1/nf square First step रे सेटा epsilon naught square होगा ना सब स्टेप epsilon square लिखছি it is epsilon square हबो sure Yes. ni square right मैं स्टैंड ले रे पटको एटा h cube हे गला h square जोड थिला ठीक अछि कोल टिके एपट से पट गला माने सब तळ तळ भूल भाल हे जिवो सब इंटरलिंक्ड एटा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एक्सप्रेशन आसी गला बट मैं इथरु बाहर करबी कोन ना वेव नंबर रो फार्मूला टा कोन माने अछि 1/λ माने अछि ना नहीं 1/λ इज वेव नंबर हला तो न्यू जगह रे 1/λ आनी केमती ना ता जगह रे c/λ पके दो इज इक्वल टू दिस मच then 1/λ is equal to z square e fourth m 8 h cube epsilon naught square into c type को पळे आसला 1/nf square minus 1/ni square. Done. This is 1/λ expression. किंतु एते बड़ एक्सप्रेशन देखला बेलको तम मुंडा ऑब्वियसली खराब हो जाउची बट मु ताको टिके शॉर्टकट करे दोछ देखो ये जो z square को छाड़ देले बाकी जो कांस्टेंट के सब रहला this is called as which constant Rydberg's constant. Rydberg's constant. This is Rydberg's constant जारे की वैल्यू Rydberg's constant वैल्यू तो माने जानि छ एग्जाम रे भी क्वेश्चन पेपर ऊपर देथियो हला so this is the expression of 1/λ Rydberg's constant that is called RH is equal to Rydberg's constant 1.03 into 10⁷ meter inverse 1.03 whose value is 1.03 into 10⁷ meter inverse Rydberg's constant value. Yes, sir. 1/λ फॉर्मूला है वेव नंबर एक्सप्रेशन एबे हम स्पेक्ट्रम को जिबा होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कोन हाइड्रोजन पई केवल हम डिस्कशन करबा जते बेले लोअर ऑर्बिट रो इलेक्ट्रॉन माने एक्साइटेड है कि हायर ऑर्बिट को पळेबे ताको जे तुम एक्साइट कर दबा एनर्जी दे दबा हायर ऑर्बिट को पळेले बट हायर ऑर्बिट तुम जानि छ अनस्टेबल दे वांट्स टू बी स्टेबल सो माने से लोअर ऑर्बिट का आसे में चेष्टा करिवे at that time they emit energy कौन emit करे से माने energy gap is equal to photon okay से गैप जेति की जहार थिबो एनर्जी गैप अकॉर्डिंग लेबे जो फार्मूला में डिस्कशन करले से अनुसार एति की वेवलेंथ रे रेडिएशन से माने emit करिवे बट की को टू जंप करिछि डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट सीरीज सो बाहर करले ओके so से अनुसार हमर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिवाइड्स इनटू मेनी सीरीज जस्ट लाइक सम ना सो सुनिछ टेल मी लाइमैन
तापर लाइमन बाल्मर Balmer, Bastian, bracket, Bastion, Pfund. bracket Pfund. ओके सब ना तुम मैंने शुणिछ तो आम से फास्ट गोटे सीरीज पढ़ा लाइमैन सीरीज लाइमैन सीरीज रे से हायर ऑर्बिट जंप करिवो को ऑर्बिट को मते व्हिच ऑर्बिट टू व्हिच ऑर्बिट लाइमैन सीरीज फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू व्हिच ऑर्बिट First orbit. फास्ट ऑर्बिट दिस इज द लाइमैन सीरीज जे कोन ऑर्बिट रो जदी फास्ट ऑर्बिट को से जंप कला ताले एठी जो रेडिएशंस गुडा सब आसिला दिस ऑल आर डिस्कवर्ड बाय लाइमैन सेटा ना है छि लाइमैन सीरीज ओके the Lyman series corresponds to the transition of electron from any higher orbit to the fast orbit ताले फास्ट ऑर्बिट माने मते कोएटी कोन हबो फास्ट ऑर्बिट माने हमर फाइनल ऑर्बिट ता सबले केते हबो 1 1 इनिशियल ऑर्बिट केते हबो n माने स्टार्ट्स फ्रॉम 2 3 4 डॉट डॉट 2 3 4 डॉट 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 से चलला पूरा ओके ए बेला चल जा तो मु जदी फार्मूला टाको बतन मॉडिफाई करके लिखि देबी ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम मु लिखु छ और z लिखे दरकार नहीं 1/nf जगह रे मु 1 पके देली आ ni जगह रे मु n पके देली हला तो कि n starts from 2 3 4 like this so 1 by lambda is equal to rh this much this is the expression of Lyman series किंतु तुमको एटी मोटे छोटो न्यूमेरिकल टे कहि करिया पई calculate the shortest wavelength of Lyman series everybody do this question formula तम आखि आगे अछि this is the formula working formula calculate the shortest wavelength of Lyman series क्वेश्चन टा करिया पुरु खाली ଗୋଟେ छोटो कथा कहू तुमको फास्ट ऑर्बिट को जंप करिवो अच्छा सेकंड रू फास्ट को आस परिवो थर्ड रू फास्ट को फोर रू फास्ट को एमती ही लास्ट को इनफाइनाइट रू फास्ट को तांता लिमिट हैला गोटे सेकंड रू फास्ट को आसीबो और इनफाइनाइट रू फास्ट को आसीबो आ बाकी समस्त मझिरे रहले ओके मु कहले कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमैन सीरीज shortest wavelength do it as quick as possible so for shortest wavelength you have to take n is equal to 2 अच्छा 2 नबो 2 काहे के नबो काहे इनफाइनाइट नबोनी shortest distance calculate करी तो orbit second orbit to first orbit टा short हबो सेकंड ऑर्बिट रो फर्स्ट ऑर्बिट टा शॉर्ट हेची एटा सेट पे से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इमिट करबो से ना कोन कहू एनर्जी रो फार्मूला कोन थिला कि एनर्जी रो वेवलेंथ से तो कोन रिलेशन ता थिला E is equal to photon energy E is equal to photon energy please tell me E is equal to what is the expression of photon energy photon ro energy formula E is equal to what so what is the photon energy formula E is equal to H nu. h nu by new places जब पके दो लंबड़ा फॉर्म टा तो केते आसीबो equal to nu is equal to c by lambda okay s by lambda पता शॉर्टकट टा भी तुमको डुअल नेचर कहितली कोन कहितली शॉर्टकट टा so 1 2 4 2 2 1 2 point is equal to 1 to 4 by lambda okay ताले एनर्जी टा लैम्बडा को इनवर्सली रिलेटेड तो जरा एनर्जी गैप टा बेसी ता लैम्बडा टा कम जा एनर्जी गैप टा कम ता लैम्बडा टा बेसी राइट सी हियर एनर्जी गैप टा जारो अच्छा ता माने कोन बुझिलो मते को मु कहि छी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ माने लैम्बडा लेस मींस एनर्जी गैप More. energy gap more lambda less means energy gap is more understood hela बुझ भल रे
लैम्बडा लेस मींस एनर्जी गैप मोर। अच्छा एनर्जी गैप मोर माने ए 2 रु जंप करिवो ना इनफाइनाइट रु जंप करिवो? Infinite. बुझो बोले रे पाठटा हला। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ शॉर्टेस्ट लैम्बडा मींस ई मोर एनर्जी गैप ता मोर हितबो हला पाखरु न शॉर्टेस्ट वेवलेंथ माने बहुत दूर जंप कले वेवलेंथ रा शॉर्टेस्ट होबो फ्रीक्वेंसी ता लार्जर होबो तो वेवलेंथ रा शॉर्टेस्ट होबो तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ माने एनर्जी गैप मोर हला तो से कोन करिवो ना बहुत दूर जंप करिवो एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट जंप करिवो तले मते को बतन लैम्बडा केते आसला RH 1 minus 1 by infinite. So lambda is coming how much? RH. 1 by RH. So is equal to how much? Calculation करिबा RH जगह वैल्यू पकेबा केते आसला? ओके जदि हम RH जगह 1.03 पकोउचे तो हमको 1 by 1.03 बाहर करियो को पड़िबो 3/7 टा इजीली ऊपर को पड़े बाहर करियो पड़िबो मते को कैलकुलेशन इजी हबो की हबो इजी ना सर सेइ पय हमें तुम गागुरु कहछि डुअल नेचर बहुत शॉर्टकट तुम कोइ जेटा बहुत हेल्प करिवो तमे सब बेले ए RH रो सब बेले बड़ प्रॉब्लम होला से सब बेले डिनोमिनेटर ही आसीबो तो हम गोटे चालाकी करी कोन करिवा हमें 1 by RH को मन रख दवा बस काम खत्म तो 1 by RH को मन रखले 1 by RH रो वैल्यू केते 911 एंगस्ट्रॉम तुम 1 by RH को मन रखि देबे सब कुछ काम लागिवो हला एबे आंसर तटा संग बाहर गला तुमको एग्जाम रे प्रिटेंड करिवो एग्जाम रे RH जगह रे वैल्यू पके दबो ता वैल्यू पके देके लिखि दबो सीधा 911 एंगस्ट्रॉम और ऑफ रे कैलकुलेशन हम करि छी हला 911 एंगस्ट्रॉम आसला ये गला शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मुझे तुमको कहबी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बाहर करिया पई एंजाय कितना को enter 2 Enter 2. longest wavelength तो enter 2 wavelength large means energy gap less enter 2 1 by lambda is equal to RH 1 minus 1 by केते स्क्वायर 2 स्क्वायर हेले मते कोठी लैम्बडा केते आसला RH फॉर्म रे को आगे केते आसला Sir, 4/3 4 by 3 RH RH. देखो तुमको डेमो ट्रिक केते काम दउची 4 by 3 1 by RH जगह केते पकेबो केते 911 911. संगे संगे कैलकुलेशन हे जिवो केते आसला को केते आसला को 1214.6. 1214 0.66 Point. okay this much angstrom right this much angstrom means 1 to 1 nano right 1 to 1 nano this is 91 nano ru 1 to 1 nano टिके मन पकेले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रो तमे तो सब जानिछ रेंज गुडा कार केते ए जो 91 नानो को 121 नानो एंगस्ट्रॉम रो गोटे नंबर काट दिले से नानो हो जिवो तो 91 रो 121 नानो मते कहलो को रेडिएशन सते लाई करूची अल्ट्रावायलेट कने विजिबल थिला 700 टू 400 अल्ट्रावायलेट थिला 400 टू 1 अब 400 टू 1 भितरे दीटा के जाउनी 91 और 121 yes so Lyman series all radiations belongs to ultraviolet region ये गला Lyman series तमे एग्जैक्ट Lyman series भलिया तमे कोन करिवो बाल्मर series करिवो हला तमे निजे करिवो आ करूनी बाल्मर series तमे निजे बाल्मर series करिवो इट करेस्पोंड्स टू ट्रांजिशन टू व्हिच ऑर्बिट हायर ऑर्बिट टू ऑर्बिट को आसीबो सेकंड ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट को आसीबो हला NF टा को तमे 2 नबो एटा को नबो 2 एटा हो बाल्मर सीरीज एटा ओके तबरे पुट करे एन टा स्टार्ट हो 3 रु हला आर सम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बाहर करबो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बाहर करबो एग्जाम रेटा सब बेले न्यूमेरिकल क्लास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हला बाल्मर सीरीज सम करबो तबरे अनवर्ड सीरीज गुडा तमे निजे निजे वर्तमान गोटा पर गोटे सीरीज करि परिबो so these are all about the hydrogen spectrum किंतु
गोटे क्वेश्चन सब एग्जाम आसे मु चाहे तुमको से फॉर्मूला कहि दउ जे हेल्प हबो कोन से क्वेश्चन टा गोटे इलेक्ट्रॉन सपोज थर्ड ऑर्बिट रे अछि हाउ मेनी पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस इट emit one electron is in third orbit how many spectral lines it can emit kete spectral lines se emit karibo how many spectral lines it can emit you can tell me the answer manually karo formula katha mu kohuni manually karo third orbit se to lower orbit re jump kale spectral lines emit karibo na n is equal to 3 jachi how many spectral lines it can emit it's a common question exam रे आसे बेले बेले सब जाकर वेवलेंथ भी पचार दिए थर्ड ऑर्बिट जंप करिबा हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस इट कैन emit ओके टेल मी द आंसर 3 to 2 को हां टेल मी आंसर कमिंग 2 हाउ टू टेल मी 3 to 1 गोटे 2 to 1 गोटे 3 to 1 गोटे आउ कोठू So 3 to 1 गोटे 3 to 2 गोटे 3 to 1 गोटे 3 to 2 गोटे 2 को आसला परे पुनी 2 रु जोटा 1 हबो सेटा भी तो जीवा ना yes sir Yes, sir. तो हाउ मेनी हला 3 3 हला ओके तमे जदि एमती मानले मु मानकर फिफ्थ ऑर्बिट कहबी एमती मानुअली देखला को तुमको टाइम लागिवो सेट में तार ଗୋଟେ शॉर्टकट फार्मूला अछि कोन से फार्मूलाटा की कह दबो कर दो शॉर्टकट फार्मूला n whole into n minus 1 by 2 n whole into n minus 1 by 2 देखो यूज करो 3 into 3 minus 1 माने 2 by 2 3 असला yes ए sir फॉर्मूला को मन रखा इलेक्ट्रॉन जदि nth ऑर्बिट रे अछि से टोटल केतरा स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट करबो मते को जदि फोर्थ ऑर्बिट रे थांदा कैलकुलेशन में केते आछि 6. 4 into 3 by 2 केतरा आछि 6 टा देखो एथरे 6 आछि कि नहीं गोटे 4 रु 3 को आसीबो 3 रु 2 को आसीबो 2 रु 1 को आसीबो अच्छा 4 रु डायरेक्ट गोटे आस परिबो कोठी 2 को 2 रु 1 हे गला ओके आ गोटे कोट के परिबो डायरेक्ट गोटे 4 रु कोठी के आस परिबो 1 को देखला गोटे 3 रो 1 को आ गोटे 3 रु 1 ऑलरेडी हेछि ना एटी देखो ऑलरेडी 6 टा हेला ना नहीं yes sir सब ऑर्बिट को गोटे गोटे हबार अछि हेला ना नहीं 4 रु 3 4 रु 2 4 रु 1 तापर 3 रु 2 ओके तापर 3 रु 1 ओके तापर 2 रु 1 तो 6 टा मैनुअली कल हबो बट मैनुअली कल भूल ही जोर चांस तुम सीधा फॉर्मूला बेटर n whole into n minus 1 by 2 नंबर ऑफ ऑर्बिट हला सो दिस इज ऑल अबाउट बोर्स एटॉमिक मॉडल बट तंग डिमेरिट्स कोन थिला माने ऑलरेडी केमिस्ट्री पढिछो म खाली टिके कहि दोछि तंग डिमेरिट्स इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम मींस हाइड्रोजन एटम फर्स्ट डिमेरिट थिला बोर्न का मॉडल केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन बा हाइड्रोजन एटम पे एप्लीकेबल थिला इट कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइपर फाइन स्ट्रक्चर्स इन स्पेक्ट्रल लाइन आमे जो कहते स्पेक्ट्रल लाइन एगुडे विषय बाहर गोटे फाइन स्ट्रक्चर डिवाइड हेछि हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना थले और बहुत किछ तमे जोडा कि कोर्स नै तम स्टार्क इफेक्ट जिमान इफेक्ट ताको सब एक्सप्लेन कर पाना थले कुड नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट जिमान इफेक्ट ओके सो ऑल these are the demerits of what Bohr-Schatterton model. Another demerit is also later it is proved by Sommerfeld. Actually the orbit is what circular or spherical circular or elliptical elliptical. elliptical Sommerfeld told the orbit is actually elliptical. Then Bohr also failed in telling the shape of the orbit. So all these are the demerits of a Bohr-Schatterton model, and this is all about the atomic physics. Thank you.